Shah is now speaking on the National Unity Day. Listen in. श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, भारत सरकार के शहरी विकास और विद्युत मंत्री, श्री मनसुख मांडविया जी, श्रम, रोजगार और युवा मामलों के मंत्री, श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर नई दिल्ली, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री बंडी संजय कुमार जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, यह क्षेत्र की सांसद महोदया, श्री प्रवेश वर्मा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, और आज इस पार्क में और देश भर में एकता दौड़ के लिए एकत्रित हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है, परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने,
मगर सरदार पटेल की लोह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है और ये तय किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये 150वीं जयंती के बाद हर साल एकता परेड को इसी भव्य स्वरूप में मनाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और मित्रों, आज एकता दौड़ को भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से मना रहे हैं। पूरे देश भर में सब
सभी पुलिस थानों पर, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। विश्वविद्यालयों में परिसंवाद रखे गए हैं और शपथ लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं, वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए युवा आगे के भारत का निर्माण भी करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ लेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे कर मैं यहां से शपथ लूंगा, आप दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ऊर्जमय संबोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करती हूं। All right, those are the latest visuals coming in. Home Minister Amit Shah paying a tribute to Sardar Patel's legacy. A political war also erupting over the same. HM also accuses Congress of sidelining Patel in history, and that's a big allegation which has come from the side of the HM. We have seen, obviously, when it comes to the Home Minister earlier, also he has made very similar attacks on the Congress party, and now we have the latest which is coming in at the moment. We heard what the Home Minister had to say. Home Minister accusing Congress of sidelining Patel in history, slamming the Congress on National Unity Day, saying Congress never gave Patel his due in the Congress era. Home Minister saying that Patel was denied his due, and also highlighting, after paying tribute to the Iron Man of India, highlighting how the BJP government, the Modi government, has always honored Patel's legacy, highlighting the Statue of Unity, saying that it stands as a symbol of Modi government's tribute to Sardar Patel. Priyank joining us live on the broadcast. Priyank, we heard, Amit Shah's speech right now, latest visuals also which we are showing of when he was paying tribute to Sardar Patel's legacy. Take us through some of the big points, takeaways from what Amit Shah had to say. Not only did he pay tribute to Sardar Patel's legacy, the Iron Man of India, but also slamming the Congress-era government, highlighting and claiming that they have sidelined Patel in history. Yes, Sati, we'll come to that, but first of all, let's see the visual that the march has started. The Home Minister has
the flag of this Run for Unity march along with the Member of Parliament who are also here on stage. But while giving his statement before the country, Home Minister has also lashed out on the Congress party for not giving proper respect to Sardar Vallabhbhai Patel, although they wanted to usurp the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel. What Home Minister has also stated that the Congress party took 41 years as a time to give this award to Sardar Vallabhbhai Patel, which was for the Bharat Ratna. So the Bharat Ratna award is certainly taken as a major thing for the Bharatiya Janata Party, where they have attacked the Congress party for not giving this award. That too on the day when the country is celebrating the 150th birth anniversary, the Jayanti of Sardar Vallabhbhai Patel. While delivering his speech, he has also mentioned one important point, that Prime Minister Narendra Modi has completed the only pending work of Sardar Vallabhbhai Patel by removing the Article 370, by clubbing Jammu and Kashmir totally as part of India as a sovereign territory. What Home Minister has also stated that while Prime Minister Narendra Modi wanted to do that, there were several hurdles, but he has finally made to do that. While we are keeping on the visuals where the Run for Unity march has already started, it will be going all across India Gate, it will be going all across the Lutyens' Delhi, where thousands of men who are wearing this white shirt as a part of symbol of peace, as a part of Run for Unity, they are marching, running towards the India Gate, towards those statues which are there for the brave hearts of the country who have lost their life, sacrificed their life for the country. So two important messages coming out from Home Minister of the country. One, the Prime Minister has made the incomplete work of Sardar Vallabhbhai Patel completed after removing Article 370, and then Congress party, which had failed to give this award to Sardar Vallabhbhai Patel, which they could not do. They took 41 years of time period to give Bharat Ratna award to him, but finally the BJP government had managed to do that. So multiple things said by Home Minister. He has also taken the pledge along with people who are present here. He has also communicated this message through media organization, through Times Now, so that the people who have been watching this particular speech, the pledge from different portions of the country can do so. And at the same time, he has also given a message that very soon Prime Minister Narendra Modi will be there in Ekta Nagar of Gujarat, where he will be taking pledge along with... Right, so you're taking us through the celebrations which are taking place. Obviously, I'll come back to you. Over the messaging which has been given on the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the significance of Run for Unity, which you are covering obviously on the ground. Priyank, do stay with us. We also have Mr. Manikam Tagore of the Congress Party who's joining us on the phone line. Manikam Tagore, good morning, sir. Thank you for joining us on Times Now. I'm sure you heard what Amit Shah had to say. Not only did he pay tribute to the Iron Man of India, but also took swipes at the Congress Party, claiming that it was your party, as the Home Minister says, which sidelined Sardar Patel in the pages of history, and it's only the Modi government which ended up giving his due. How do you respond, sir? We all know that Sardar Patel was a born leader, and he was today is his birthday, and he is the strongest Congress leader Gujarat has ever gave. And Sardar Patel, as a Congress leader, was involved in all the satyagrahas of historic satyagrahas, which turned India's freedom struggle into a powerful organized movement. And Mahatma Gandhi, he was working side by side with Mahatma Gandhi. That's his history, and he has always been not with those people who are RSS and right-wingers. He has always with Mahatma Gandhi. And Mr. Amit Shah always wants to twist that story. RSS was born in 1920, but Sardar Patel never joined RSS. He was with Congress Party. He was with Mahatma Gandhi. Therefore, it is very clear that today is a day where we all should celebrate Sardar Patel's birthday and Sardar Patel's contribution to the country and his participation in building the Congress organization across India, particularly in Gujarat, and particularly the way Mahatma Gandhi developed him to be a leader
and the way Sardar Patel grew to that stature where Mahatma Gandhi always treated him as his younger brother, and they were together in the fight for India's independence. We should all celebrate that. This cheap politics of Amit Shah must stop. So you're saying that BJP is indulging in politics. Thank you, sir, for joining us. We also have Mr. Pradeep Bhandari of the BJP with us, who's joining us on the phone line. Morning, sir. Thank you for joining us on Times Now. I'm sure you heard what the Home Minister Amit Shah had to say. Amit Shah paying tribute to the Iron Man, but also, accusing the Congress of sidelining Patel, saying that Congress never gave Patel his due. Congress party, counter says and accuses the BJP of distorting history. How do you counter that attack, sir? Sir, it is a hard fact that Jawaharlal Nehru gave himself the Bharat Ratna, but it took the Congress party more than 40 years to give the Loh Purush Sardar Vallabhbhai Patel the Bharat Ratna. It's also a hard fact that the Congress working committees wanted Sardar Patel as the first Indian Prime Minister. However, Jawaharlal Nehru was selected as the first Indian Prime Minister. It is a hard fact that Maniben, the sister of Sardar Patel, wrote in a letter how she was Sardar Patel was extremely dissatisfied and unhappy with the way Jawaharlal Nehru conducted his policy, whether it is Jammu and Kashmir and others. So yes, it is true that the Gandhi Vadra family has not respected India's greats, whether it is Sardar Vallabhbhai Patel or Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. The Gandhi Vadra family believe that the freedom struggle started with Nehru and ended with Nehru. Right, thank you, sir, for joining us on countering that attack coming in from the side of the Congress party. Priyank continues to be live with us. Priyank, on one hand, there is a political fight which has erupted over Patel's legacy, but also let's talk about the celebrations which are happening on the ground. Take us through the type of messaging which the Modi government is trying to give when it comes to the celebration of the 150th birth anniversary of Sardar Patel. How important is the run for unity when it comes to the idea of promoting national integration, the idea behind these celebrations? If you could elaborate on that. See, Meenakshi, it's an undeniable fact that over the period of many years since the post-independence, there used to be very small celebration which used to happen for the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. So the Bharatiya Janata Party since 2014 has taken it to a different level. You can imagine that they have managed to build up a statue which is in the tallest of the world. They have managed to build up a statue where people can see the world, Man Narmada, from the heart of Sardar Vallabhbhai Patel statue. If you go talk about the height, people from anywhere in the world can come to that particular height, which is much above Statue of Liberty. They can look at the world from this particular height, which is of 162 meters above the ground. So they have taken it to a different level by building up this kind of statue, and the kind of Ekta Nagar concept which has been brought in Gujarat is certainly amazing, which is certainly dedicated for the artisans, those local people who have been staying there, the tribals who have been staying there. So that is on a conceptual level. What you are watching right behind me is the thousands of people, youth from several strata of the society. Some are from the uniformed services, some are service class, some are from different portions of the national capital, who have come here for celebration of this particular march, which is known as Run for Unity. This is a march which is for the unity of the country. This is a march which is there for the prosperity of the country. So this kind of messaging is certainly growing in the heart of people who have been watching it through our broadcast also. So certainly BJP is right on their point that they have managed to build up a huge impact of Sardar Vallabhbhai Patel. While talking about these events are concerned, they will certainly also bring in the mind of people. But at the same time, Home Minister has also put forward this point, which was certainly in his eye, that why it took more than 40 years for the Congress party to give Bharat Ratna to Sardar Vallabhbhai Patel, who had brought all these 162 small locations, tribes, territories, small nizams, and all these small dynasties together to bring India as what India should have been. At the same time, he has also given a message that there was only one pending work which was left for Sardar. And since you're speaking about and telling us
on what Amit Shah also had to say as India is celebrating the Rashtriya Ekta Divas. It's only fair we listen in to that excerpt from Amit Shah's speech, and then we'll slip into a short commercial break, viewers.